Hello my dear students, कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. Welcome to the new video. Today we are going to start a new topic from grammar, that is adverbs. Students, grammar के last video में हमने देखा था कि adjectives, noun and pronouns को describe करते हैं, यानी कि उनके बारे में कुछ न कुछ हमें बताते हैं. But do you know any word जो adjective या verb को describe करते हैं या उनके बारे में कुछ बताते हैं? They are adverbs. Let's know what are adverbs. For knowing that, read these examples first. Shilpi eats bread quickly. The man is very old. In the first example, Shilpi क्या कर रही है? She is eating bread. But is any word जो कि हमें बता रहा कि वो कैसे eat कर रही है? That is quickly. Here, eating is verb, and the word that is telling something the verb is quickly, which is adverb. Same in the second example. The man is very old. यहाँ man की quality कौन सा word बता रहा है? Old. तो old हमारा क्या हुआ? Old हमारा हुआ adjective. और एक बार अगर आप फिर से सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, then you will find old के जस्ट पहले आया हुआ है very, जो बता रहा है कि वो मैन कितना ओल्ड है. That is very old. Very adjective के बारे में कुछ बता रहा है. So that is adverb. Now let's see some more examples. The child sat silently in his room. The doctor came immediately. In the third example, sat is verb. And child कैसे बैठा हुआ था? Silently. तो verb is sat and adverb is silently, जो कि बता रहा है something about the verb. In the fourth example, the doctor came immediately. Came is verb and immediately is describing the word, so that is adverb. अब आप समझ चुके होंगे कि adverb किसी सेंटेंस में आए verb, adjective या फिर किसी other adverb को define करते हैं. Let's see the definition. Adverbs. An adverb is a word which adds something to the meaning of a verb, adjective or another adverb. ऐसे words जो sentence में आए हुए किसी adjective, verb या किसी दूसरे adverb को define करते हैं, उन्हें हम adverbs कहते हैं. An adverb is a word which tells how an action is done, when it is done and where it is done. एडवर्ब हमें ये भी बताते हैं कि एक्शन कैसे हुआ था, कब हुआ और कहाँ हुआ. जैसे इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, शिल्पी ईट्स द ब्रेड क्विकली. एडवर्ब इज टेलिंग कि एक्शन कैसे हुआ था, क्विकली. इन द एग्जाम्पल, द चाइल्ड सैट साइलेंटली इन हिज रूम. हियर ऑल्सो साइलेंटली शोज हाउ द एक्शन इज डन. एंड इन द लास्ट वन, द डॉक्टर केम इमीडिएटली. The adverb immediately shows when the action is done. Hopefully you may have understood the verb. Let's see some more examples. Diya writes neatly. Deepika will go home tomorrow. यहाँ पर दिया क्या काम कर रही है? Write करने का. And वो कैसे write कर रही है? Neatly. So here, verb is writes and adverb is neatly. Deepika will go home tomorrow. Go is verb here. And tomorrow हमें बता रहा है time, that is adverb. Students, being clear, अब हम move करते हैं towards the exercise. The question is, underline the adverbs and write the described words in the blanks. Also write whether they are verbs, adjectives or adverbs. सबसे पहले आप सेंटेंस में आए हुए adverbs को underline करेंगे और दिए गए blanks में वो word लिखेंगे जिसे वो adverb define कर रहा है, जिसे वर्ब डिस्क्राइब कर रहा है. साथ ही साथ आपको ये भी बताना होगा कि डिस्क्राइब वर्ड वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है. द सेंटेंसेस आर हियर. राहुल स्पोक रूडली. फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब को अंडरलाइन करना है. यहाँ पर एडवर्ब कौन सा वर्ड है? रूडली. और ये किसे डिस्क्राइब कर रहा है? स्पोक. इज स्पोक एडजेक्टिव? नो, इट इज वर्ब. तो हमने अंडरलाइन कर लिया है रूडली को. अब हम फर्स्ट ब्लैंक में लिखेंगे स्पोक और सेकंड में लिखेंगे वर्ब. सेकंड इज माय सिस्टर रन्स वेरी फास्ट. सिस्टर रन्स फास्ट, बट वो कितना फास्ट रन करती है? वेरी. फास्ट इज एडवर्ब एंड वेरी इज ऑल्सो एडवर्ब.
सो यहाँ वेरी डिस्क्राइब कर रहा है फास्ट को. सो हम अंडरलाइन करेंगे वेरी को, फर्स्ट ब्लैंक में लिखेंगे फास्ट, एंड क्योंकि फास्ट एडवर्ब है तो हम सेकंड ब्लैंक में लिखेंगे एडवर्ब. नेक्स्ट इज ही रिसाइटेड द पोएम नाइसली. उसने पोएम को कैसे रिसाइट किया? नाइसली. तो यहाँ वर्ब इज रिसाइटेड एंड एडवर्ब इज नाइसली. एडवर्ब नाइसली को हम अंडरलाइन करेंगे, फर्स्ट ब्लैंक में लिखेंगे रिसाइटेड, एंड क्योंकि रिसाइटेड वर्ब है तो सेकंड ब्लैंक में हम लिखेंगे वर्ब. She is terribly angry is the fourth. Here, can you tell which word is adverb? Terribly, which is describing angry. So underline terribly, write angry in the first blank and in the second write adjective. The last is Meeta has an extremely beautiful voice. Here, adverb is extremely, which is describing adjective beautiful. So underline extremely, write beautiful in the first blank and adjective in the second. Students, हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. Now it's turn for your homework. The question is, underline the adverbs in the sentences given below. इन दिए हुए sentences में आप adverbs को underline करेंगे. Now we will end this video here, hoping that the content was easy enough for you to understand. So take care. Thank you. Bye bye.